I want to welcome all guests who have joined today's social media etiquette workshop. So just as a introduction, I want to tell that my name is Javed Hanif Rao. I'm General Secretary of NEDAC Board 2023 and also Chair of Training Committee and Global Interaction Committee. This board started 2 months back and we are trying to do some trainings. This is the first training we are going to do. NEDAC is the world's largest alumni of NED with around 800 members in GTA. Social media workshop is our first program. So, this will be presented by this presentation will be given by Engineer Awais Mughal Saab. He is an industry veteran of 25 years. He has seen the evolution and growth of social media closely from the early days of email. He is also a keen observer of human behavior on social media and how they interact with each other. While different media is suited for different audience, he will today as it is the most used social media by professionals. He is coming from NED. We are all professionals in some way. So hear him out as he shares his experience with us today. The hope is we will all learn a few things today about social media etiquettes. And actually, before starting, I want to share some housekeeping rules which are important to keep the meeting smooth. One is that please all participants keep their mic closed so that the meeting is not disturbed, presentation is not disturbed. Similarly, kindly keep all videos closed. It will improve the presentation quality because if a lot of videos are open, then this presentation quality will reduce. So our friends who are on the meeting, please close your mic and videos. Another thing is that all questions will be taken in the chat box only. We don't want to, not on the talk. And Awais Mughal Saab will be answering the questions at the end of the workshop. Now I will request our President Ghulam Hussain Malik Saab to say a few words before we give this to Engineer Awais Mughal Saab for the presentation. Ghulam, please. Yes. Can you everybody hear me clearly? Yeah. Yes, thank you. Fellow NEDAC members, ladies and gentlemen, and other speakers for today's workshop on social media, Mr. Awais Mughal, Assalamu alaikum. As Brother Javed Hanif introduced, Mr. Awais Mughal has expertise on social media. And besides social media, he is a highly talented individual involved in various disciplines, mainly in media marketing industry. I'm thankful to our training committee who is working hard arranging training program for you. I stand before you today as a President NEDAC, and I'm honored to welcome you on this special occasion of our NEDAC webinar. It is a truly pleasure to see you all virtually, and I extend a warm welcome to those who have recently joined our NEDAC. Today's topic is extremely important in our digital age, the effective use of social media platform to showcase our experience and professional knowledge. In this interconnected world, social media has emerged as a powerful tool for communication, networking, and personal branding. As an engineer, we possess a wealth of knowledge and experience in our respective field. We have acquired knowledge and skills that are valuable to others. However, if we do not effectively leverage social media platform, we may be missing out an opportunity to share our insight and make a meaningful impact. I encourage
each and every one of you to embrace social media as a tool for professional development and networking. Let's leverage platforms such as LinkedIn, Twitter, Facebook, and professional blogs to share our success stories, engage in meaningful conversation and other guidance to aspiring professional. Also, I encourage each and every one of you to engage actively with NEDAC. Let us work together to create meaningful initiatives that benefit to all of us. At the end, I'm extremely thankful to Mr. Uwais Mughal, who has took time from his busiest schedule and going to provide us social media techniques and brand ourselves. On August 20th, we have another event of social gathering. There's a NEDAC family picnic. We will spend day full of fun and enjoyment, and this will be another opportunity to bring us, each of us, more closure. Please join us on August 20th with your family. Thank you, and may our NEDAC continue to flourish and make lasting impact. Thank you. Thank you again, and God bless you all. Thank you. Uwais Mughal Sahab, thank you very much for your presence, and can you please take over this meeting now and let us start our presentation? Thank you. Thank you very much, Jahazeb Sahab or Javed Sahab. बहुत बहुत शुक्रिया. I was looking at the names of people as they are joining. Almost 50 have joined. All of them look like Pakistani names to me, so that's great. Even though the lingua franca for this call is English, it is possible I may say a few words in Urdu, and hopefully everyone will understand, because just by telling the names who's on, I can tell that everyone should be able to understand. तो बहुत बहुत शुक्रिया. आप देख रहे हैं NEDAC लोगो बॉटम राइट पर, इन्होंने स्पॉन्सर की है आज की ये तकरीब. बहुत शुक्रिया. And I'm very glad to see whoever designed this logo. There is an NED logo in the innermost circle. Then there's a Pakistan flag, Canada, and this is very thoughtful logo. So good job, whoever did that. So with that, we'll go into our first slide. इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, I wanted to build a little bit of credibility that what makes me stand here and able to talk to you, and why should you listen to me. मेरे बालों से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन I am an old timer. मैं उस वक्त से हूँ जब से इंटरनेट बनना शुरू हुआ था. It was really in the infancy when I started working on some of the communication stuff. My degree from NED, which we all have a same connection, is in electrical. So communication was part of my degree as well as moving forward. तो पिछले 25 साल में मैंने हर चीज को टच किया है. इसमें याहू ग्रुप्स भी हैं जो कि सबसे पहले शुरू हुए जब लोगों ने एक दूसरे से कनेक्शन शुरू किया. इट वाज द अर्ली डेज ऑफ सोशल मीडिया, और उससे पहले ईमेल जाहिर है. लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द ब्लॉग्स आई हैव डन. लेफ्ट साइड से जो दूसरे नंबर पे है, आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट. दिस इज कॉल्ड pakistaniyat.com. अगर आपको याद हो, ये पाकिस्तान का सबसे पहला बस कसीरुल इशाद ब्लॉग था. 2011 से 2016 तक डॉक्टर आदिल नजम के साथ मैंने इसको शुरू किया था. और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो डॉन न्यूज़पेपर जो आज है, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ इट. उन्होंने इस स्ट्रक्चर को, 3 कॉलम के स्ट्रक्चर को यूज किया था, एंड दैट्स हाउ इट इवॉल्व. सो आई फील प्राउड इन सम लिटिल वे. कभी कभी मुझे रेडियो का भी शौक होता है, सो आई गो ऑन द लोकल FM रेडियो इन ह्यूस्टन. वो तस्वीरें जो हैं बॉटम लेफ्ट पर आप देख रहे हैं. मुझे कुछ किताबों में शेयर करने का मौका मिला है, जिसमें आबाद, जो कि पाकिस्तान की रियल स्टेट है, उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद के बारे में एक बार कुछ लिखना था. सो आई गेव देम अ होल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ नाज़िमाबाद एंड द सिविल लेआउट. Since we are all engineers, I will talk about some of the town planning that went into North Nazimabad and Federal Bay area. So that got published in Shelter. क्रिकेट का मुझे बहुत शौक है, तो अंदरूने कराची जो टेप बॉल क्रिकेट होती है उसके बारे में मैंने लिखा. जावेद जब्बार साहब की किताब व्हाट इज पाकिस्तानियत, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है. और ट्रेनों का मुझे बहुत शौक है, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ट्रेन्स के बारे में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया. सो एनीवे, दिस लेक्चर इज नॉट अबाउट मी, बट आई होप के अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. तो आगे जो मैं कहने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे.
So here's the social media. This is a meme that came 2 days ago. And I could tell from the names who are attending this call that many of you must have received this because we are on the same WhatsApp group. किसी ने लिखा था कि हमारी दादी अगर होती तो वो कंप्यूटर को इस तरह सजा के रखती, सलीके से रखती. तो वाकई 20 साल पहले this is how the pieces used to be. Computer used to be such a cute place. You would go and learn new things. You will learn technology. लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ है कि उसमें you have to be very careful how you use the technology. So that's what we're going to talk about today. आप कुछ सेकंड के लिए इन टाइल्स को देखें और सोचें कि आपके दिल में क्या जज्बात या क्या इमोशंस उभरते हैं. हो सकता है कि आपके जज्बात बहुत से जो है वो इनमें से कुछ हो. वेस्ट ऑफ टाइम. जब हमारे बच्चे फोन लेके बैठते हैं तो इट सर्टेनली लुक्स लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. It does look like that I want to go on some of the social media and I want to see how many people have liked my pictures or my. ये एक इंसान की फितरत है कि उसको मशहूर होना अच्छा लगता है. तो हम में से बहुत से लोग ये चेक करते हैं यार मेरी लाइक्स कितनी है. हो सकता है कि आपको साइबर अटैक का खतरा होता हो सकता है कि आप ग्रुप रन कर रहे हो सकता है कि आप नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो. तो ये बहुत सारे जज्बात हैं. जब भी सोशल मीडिया का लफ्ज आता है तो हमें लगता है कि इनमें से कुछ जज्बात हैं जो हमारे वो उसको टच करते हैं. However, today आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि सोशल मीडिया के एटिक्वेट्स. उर्दू में क्या कहेंगे इसको कि सोशल मीडिया के जो है किस तरह उस पर बातें करनी चाहिए और किस तरह नहीं करनी चाहिए. तो इस पे हम आदाब लफ्ज था जो मैं ढूंढ रहा था. सोशल मीडिया के आदाब. तो इस पे अब हम बात करेंगे. देखें आगे क्या इसमें मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो ये तस्वीर देखें. इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए. 2 निशानियां हैं कम से कम. पहली निशानी तो ये है कि इस तस्वीर की क्वालिटी बहुत खराब है. आपको यकीनन लफ्ज थोड़े से धुंधले नजर आ रहे होंगे. धुंधले का मतलब इट्स नॉट सुपर शार्प. और दूसरी बात मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. ये 14 जून 2014 को एक ट्वीट हुई. उस रोज ब्राजील के शहर नटाल में अमेरिका की टीम घाना के साथ फुटबॉल सॉकर का वर्ल्ड कप मैच था और उसमें अमेरिका ने घाना को 2-1 से शिकस्त दी. And on the very same day, Delta Airline had started a direct flight from US to Ghana's capital, Accra. और वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे. और सेलिब्रेशन में उन्होंने एक ट्वीट लिखी कि कांग्रेचुलेशंस US has won 2-1. और उसमें उन्होंने एक जराफे की तस्वीर लगा दी. और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई क्योंकि घाना के अंदर जराफे नहीं होते. So just think about it कि उन्होंने सोचा कि एक अफ्रीकी मुल्क है. अफ्रीकी मुल्क से हमारे जहन में क्या आता है कि वहाँ वाइल्ड लाइफ होगी. हो सकता है कि जराफा हो. तो उन्होंने एक तस्वीर लगा दी. बट इट बिकेम अ बिग पॉलिटिकल इशू. और उसके कुछ ही मिनटों के बाद उनको ये पूरी ट्वीट वापस लेनी पड़ी और बल्कि सॉरी करना पड़ा पब्लिकली कि आई होप वी वर मोर पॉलिटिकली सेंसिटिव बिफोर वी सेड दैट. एक और एग्जांपल देखें. ये डिजोर्नो पिज्जा की है 2014 की. यूएस फुटबॉल के एक प्लेयर था. उसका नाम था रे राइस. आई एम श्योर ही इज स्टिल हियर. वो और उसकी पार्टनर जेने राइस they were in a violent relationship. तो इसकी पार्टनर जेने राइस ने एक ट्वीट किया कि शी इज इन वायलेंट रिलेशनशिप और उसने रीजन दिया कि वो इस आदमी के साथ क्यों है. और उसने उसको हैशटैग किया why I stayed with this person even though he's violent. तो ये एक बहुत सेंसिटिव और हसास मौजू था. फौरन हजारों खवातीन और मर्द उन्होंने इस हैशटैग को लिया और उस पे अपने एक्सपीरियंस बताने लगे कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है और why did we stay with the partner who may not have been the best partner to begin with. डिजोर्नो पिज्जा ने देखा कि इस हैशटैग पे हजारों लाइक्स आ रही हैं विद इन अ मिनट. उन्होंने इसको हैशटैग why I stayed को लेकर एक पिज्जा का एडवर्टाइजमेंट बनाया. अगर आप इसको तेजी से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि while I stayed instead of why it says while I stayed you had pizza. कि जब मैं तुम्हारे साथ थी तुम पिज्जा खा रहे थे. इसके बारे में आप सोचेंगे कितना रॉन्ग मैसेज है कि एक तरफ बहुत सीरियस मामला है where domestic violence is being discussed and DiGiorno Pizza has picked up that hashtag
and they are trying to advertise their pizza. इसकी इतनी बड़ी controversy हुई कि they had to take it down within minutes. और उसके बाद वो आज तक sorry कर रहे हैं और इस बात को 9 साल होने वाले हैं अगले महीने. So what I'm trying to get at is, while social media is such a boon, we have to be careful of how we act on it. And I'll give you one more example, and then we'll go into some regular stuff. आप सबको 2011 की अरब स्प्रिंग याद होगी. फरवरी के महीने में 5 मुल्क, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, यमन और बहरीन, वहां पर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुई. तहरीर स्क्वायर की आपने फुटेज देखी होगी. और ये बहुत सेंसिटिव मामला है, सियासी मामला है, पॉलिटिकल है, इस पे बहस जो है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. When this was happening, केनेथ कोल जो कि एक फैशन शू कंपनी है, वो यहाँ जूते बेचते हैं, मेरे पास भी शायद हो एक पेयर उनका, हो सकता है आपके पास भी हो. But they were very insensitive. They saw that, okay, a lot of people are talking about Arab Spring, and they wrote this tweet कि लाखों लोग कायरा में जमा है और अफवाह ये है कि वो उन्होंने हमारी नई स्प्रिंग कलेक्शन देखी है. अब स्प्रिंग इज अरब स्प्रिंग को वो अपने जूतों की स्प्रिंग के साथ मिला रहे थे. सो दिस वाज अ वेरी वेरी बैड पॉलिटिकली रॉन्ग कमेंट. अगेन दे हैड टू टेक इट डाउन. अच्छा, मैंने जो अक्लमंदों की निशानियों की बात की थी, उसमें पहली बात तो ये थी कि तस्वीरें बहुत धुंधली हैं, और दूसरी बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी आप इंटरनेट पर लिखें वो कभी भी जाता नहीं है. अगर आपने एक लाइन लिखकर मिटा भी दी है, आई कैन अश्योर यू इट कैन बी डग आउट years and years after. The 3 examples I showed you, these are all 10 years old, और मैंने गूगल करके निकाली है. If you search for it, you can still find them. तो ये जो भी हम लिखते हैं, be careful, don't write loosely, because it can be brought out. कोई भी चीज इस पे मरती नहीं है. और जो पहली निशानी धुंधली होने की ये थी कि प्लीज डू नॉट यूज, हाउ टू से, इट लुक्स लिटिल बिट अनोइंग कि जब भी आप कोई चीज, कोई इमेज यूज करें, इट हैज टू बी शार्प एंड क्लियर. मैं नहीं ले सका क्योंकि मैंने इसको पुरानी 10 साल पुरानी तस्वीरें डिग आउट की हैं, सो दैट्स हाउ द क्वालिटी केम. बट इफ यू आर डूइंग एनीथिंग ओरिजिनल ऑन, एंड यू शुड, on the web and social media, try to have a good quality image. It just creates a very good first impression. अब इतना तो मैंने आपको डरा दिया, लेकिन ये इतना भी कोई भयानक नहीं है. There are a lot of good things about social media, and we'll go into that. So let's go into some of the things. Which social media matters the most to professionals today? I see all of us have NED connection. I think I can see that almost 60 plus people have joined by now. And we all have professional degree, I'm very sure. तो आजकल कौन सा ऐसा मीडियम है कि जिस पे प्रोफेशनल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं? तो बियॉन्ड डाउट दैट इज लिंक्डइन. मैंने कुछ स्टैट्स कलेक्ट किए हैं. लिंक्डइन पर 722 मिलियन यूजर हैं. दुनिया की आबादी 8 अरब है. उसमें से अगर 700 मिलियन लिंक्डइन पर है, इसका मतलब है कि हर 10वां आदमी जो है वो लिंक्डइन पर है. So it's very, very important that we take it, how to say, not just serious, but be present there. And this is the impression you have. This is the first impression you create digitally. That's why LinkedIn is very, very important. And of course, there are few more. Twitter has 330 million. Twitter की जो audience is a little bit different. वो ज़्यादा सियासी और current affairs को discuss करते हैं. Facebook is more your friends and family. YouTube can be anything, or Instagram is certainly for younger generation. Younger means younger than us. So I think that there is a certain culture and a certain people who follow these different social media platforms. But for today, we will concentrate on LinkedIn since we are all professionals and that's where we want to be. Okay, let's go into the social media etiquettes के आदाब क्या हैं social media के. वही आदाब हैं जो इस्लामियात में आपने मजलिस के आदाब पढ़े होंगे कभी. अगर आप गूगल करें तो आपको लंबी लंबी लिस्टें मिलेंगी. Maybe 100 things that you should do, maybe same thing that you should not do. However, I have picked 5 which from my experience have been very, very relevant. So we'll go into them one by one. Let's start with what are the 5 do's we should have on social media. सबसे पहली बात, update your profile. How unprofessional it would look that if I go search for you and the photo you have is from 30 years ago
and the things you're talking about are also long from a long while ago. Again, the impression we are creating here is for professional network. It is very important that your profile has to be kept updated all the time. Please add a picture to your profile. एक research के मुताबिक, और यकीनन ऐसी बहुत सी researches होंगी, एक के मुताबिक आपके search आपको discover करने के chances 11 गुना. Once again, I repeat, 11 times more if you have a image or a picture on your profile. So if you don't have, please try to think about taking a professional photo, a headshot, and add it to your profile. Also add a summary to your profile. People don't just want to look at you, they also want to know कि आप करते क्या हैं. Give couple of lines to it. अगर आप नहीं लिखेंगे तो it's not a game killer, लेकिन फिर अगर if I'm looking at somebody for the first time, मुझे उसकी तस्वीर नजर आती है, लेकिन उसमें क्या पुरस्कारियत है, ये बंदे ये तेरे ये क्या है, गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे. So please write something about it so we know what do you do. It's very important in a professional platform. Okay, third thing is do not write in third person. एक हमारे, मैं सियासत की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सियासी लीडर हैं, वो हमेशा अपने आप को थर्ड उसमें थर्ड पर्सन के सीखे में यूज करते हैं. I would request whoever has joined, please mute your microphone and we'll continue. तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे अवैस मुगल जो है उसने ये काम किया और मैंने NED से, अवैस मुगल ने NED से ग्रेजुएट किया, अवैस मुगल अब इस कंपनी में काम कर रहे हैं. It doesn't look good. So don't talk about yourself in third person. Use पहला सीगा यूज करें, use I and we. Also, please do include your email address. Whoever finds you on social media may want to contact you. जरूरी नहीं है कि आप फोन दें. फोन लिखने का मतलब है you will be subjected to privacy issues or spam. But I think email एक बेज़रर contact करने का जरिया है. It's perfectly okay to give your email address on the LinkedIn page. For headlines, use this question कि मैं आपकी क्या help कर सकता हूँ. ये मत लिखेंगे मैं expert हूँ जनाब electrical engineering में. I'm sure you are expert, लेकिन जब कोई खुद अपने बारे में ऐसी बातें करता है तो हमें लगता है कि यार ये थोड़ा मगरूर है. So imagine आप human psychology के साथ खेल रहे हैं. You don't call yourself I'm a rock star, मैं गुरु हूँ, मैं ninja हूँ, मैं expert हूँ. Please be humble a little bit, क्योंकि जो पढ़ रहा है he can see right through it. It comes really across as a, how to say, not a very humble person. So try to put your heading, how can I help you? How do I help? And how do I help your business grow? Things like that. And as we go forward, we will look at some of the examples. तो सबसे पहले मैंने photos की बात की. Let's take a look at some of the photos which we should not put. Number one, उसने उसको ऐसे squeeze किया, you can tell कि उसके X और Y axes are all wrong. उसकी क्या कहते हैं उसको, aspect ratio is not 3:4. So please be professional when you put your photos. Number two, I'm sure the lady is doing some good volunteer work maybe, but her photo is so far away, I cannot tell who is it. Number three, I'm sure अगर आप party कर रहे हैं तो that's not the photo you want to put on a professional network. Number four, जो है, you can see there are black columns on the right and left. This does not look professional. Number five, I'm sure this guy is a very professional music player. He's very good at it. लेकिन मुझे इसकी शक्ल नजर नहीं आ रही. If I see him in the real life, I will not be able to recognize. So please make sure कि आपकी शक्ल तो नजर आए if you are putting a photo there. Number six is very, very common. If you look at your friends, you will see many photos like this where light is above your head. Light has to come from the front. So your face has to glow, not the background. Number seven is obviously too small. और number eight, अगर आप कोई photo नहीं लगाएंगे तो जो software है, जो social media platform है, they will put some random photo. कभी वो इस तरह का एक Lego house डाल देते हैं. It does not appear professional. So please refrain from that. So these are some of the examples of bad photos. अच्छा, अच्छी photos कौन सी होती हैं, अच्छे profile कौन से होते हैं, उसमें से मैंने कुछ choose किए हैं. जरूरी नहीं है कि आप मुझसे एग्री करें, लेकिन just hear me out. In my opinion, these are a very good profiles, and let me tell you why.
इसकी आप एंथनी की फोटो देखें, द रेशो ऑफ द फोटो टू द सर्कल, उसका जो हेड है, उसका जो चेहरा है वो पूरे सर्कल में 3/4 है तकरीबन, और एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। 3/4 आपका हेड हो और फिर आपका थोड़ा सा कॉलर्स और शर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो नजर आना चाहिए, दैट्स इट। अगर इसको आप बहुत जूम इन जूम आउट करेंगे, इट वोंट लुक गुड। दिस इज द परफेक्ट एस्पेक्ट रेशो। इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें, जो बैनर है, लुक एट वेयर माय कर्सर इज, इसमें ताजमहल है, इसमें ब्राजील की फोटो है, इसमें आईफल टावर है, इसमें बिग बेन है, इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये देखें कि ये आपकी साइकोलॉजी, आपकी नफ्सियात को ग्रैब कर रहा है कि अब मुझे कोई टेक्स्ट पढ़े बगैर जो मेरे जहन में तस्वीर आएगी वो ये कि एंथनी जो है इसका बहुत ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ये सिर्फ अपने छोटे से गांव के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। तो ये आप देखेंगे इसने कैसे नफ्सियात से काम लेकर और उसको यूज करके अपना ये प्रोफाइल क्रिएट किया है। इट गिव्स हिम दिस ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और आपने एक चाइनीज वर्ड बहुत सुना होगा, फंगशुए। फंगशुए का मतलब होता है कि जिंदगी में बैलेंस रखना। आई एम श्योर के इस्लाम में भी ऐसा है कि बदी और नेकी की ताकतों को कैसे बैलेंस किया जाए, लेकिन इधर ये चाइनीज कॉन्सेप्ट है फंगशुए, जिसमें अगर आप ग्लोबल कोई, आपने देखा होगा कि बहुत से एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने दुनिया का नक्शा अपने पीछे लगाया होता है, और उसकी वजह ये होती है कि इन अ फंक्शन, इन चाइनीज बैलेंसिंग एक्ट, इट शोज दैट यू हैव दिस ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से। बात लंबी हो गई, बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू हियर। लेट्स गो टू लुक एट अनदर, ललेना। इसके the thing I like about this profile was कि मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। All I need to see is that arrow going high and what she has written as dream high. That's it. मुझे 5 सेकंड के अंदर ये हुक मिल गया कि okay, Lalena wants to dream high, she wants to do something big. तो इसने ग्राफिक्स और वर्ड्स को यूज करके आपकी नफ्सियात में वो हुक क्रिएट किया। नफ्सियात is not the right word, but in your mind she has created that hook that you got the message very quickly. ये साहब जो है टेड स्केक्टर, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ फैशन और समथिंग लाइक मार्केटिंग इन अ यूनिवर्सिटी। मुझे ये प्रोफाइल इसलिए अच्छा लगा कि इसकी तस्वीर जो है इज डिफरेंट एंड ही इज शोइंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। लुक एट हिम, सी वेयर माय कर्सर इज। इसने अपनी चिन के नीचे मुट्ठी रखी है लियाकत अली खान की तरह। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स पोर्ट्रेइंग कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, बट द फर्स्ट इंप्रेशन यू गेट इट इज द गाय इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट ही डू। एंड देन देयर इज ऊपर जो टाइटल है उसमें एक सनग्लासेस है या ग्लासेस है, एंड इट्स आल्सो गिविंग यू दिस ग्लोबल पर्सपेक्टिव। उसमें कोई मेट्रो, किसी बड़े शहर की तस्वीर है। सो इट्स टेलिंग यू दैट दिस गाय हैज अ बिगर विजन. He is not narrow, he's a bigger vision guy, and of course the details are in there. So the short conclusion of this image, create an image that can intrigue people. Intrigue का मतलब लोगों में curiosity बढ़े कि यार ये क्या है, मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, there is something different about this guy. Okay, this one is completely different. इसमें कोई color नहीं है, it's all white. लेकिन जिस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया वो थी इसकी सबसे ऊपर की पहली लाइन। जब वो इत्तेफाक से वो टेक्स्ट छुप गया है मेरी स्क्रीन पर, बट आई थिंक यू कैन ऑल रीड इट। इट इज समथिंग कि रेचल कुछ करना चाह रही थी एंड ही हेल्प हर गेट हर टू हर एम्बिशन। जस्ट रीडिंग दैट लाइन टेल्स यू एग्जैक्टली कि एंथनी इंग्लिश आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। So that I think was a very powerful message right above that. और उसने अपने signature किए हैं right side पे. It's necessary, may not be necessary, but it's certainly creating a personal brand कि ये क्या आपको बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब वो तो थी अच्छी एग्जाम्पल, ये भी अच्छी एग्जाम्पल है। However, I will not suggest कि आप इसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। मैंने इस पर्सन का नाम छुपा दिया। ये कोई प्रोफेशनल है जो कि लेनोवो कंप्यूटर्स में काम करती हैं, एंड जस्ट लुक एट द इमेज शी हैज पिक्ड। मे बी इट्स ओके फॉर सर्टेन डेमोग्राफी, बट probably not at a LinkedIn.
अगर आप search करें on this profile now, she has actually changed this photo, but this was like a month ago when I picked this image. So while it's a great graphic, it's very colorful. However, may not be the perfect thing if you are in a professional network. अच्छा, अब दूसरी चीज पे आते हैं कि सेकंड डू, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए. आई एम टॉकिंग लॉट ऑफ उर्दू राइट नाउ बिकॉज आई नो कि मेरे 70-80 लोग जो यहाँ पर हैं, दे आर ऑल फ्रॉम NED एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको कुछ आप उर्दू समझ सकते हैं. बट इफ द ऑडियंस वाज डिफरेंट, आई विल स्टिक टू मोर इंग्लिश. So know your audience beforehand on what you are going to present and what you are going to put on social media. Do not mix your audience on one platform with the other. जो Facebook पे आपके दोस्त हैं, जरूरी नहीं कि LinkedIn पर भी वही हो. You have to keep it different. और जो पोस्ट आप Facebook पर डाल रहे हैं कि यार मैंने सुबह बर्गर खाया बहुत मजे का था, आज मैंने हलवा पूरी का नाश्ता किया है, that's not the stuff to put on LinkedIn. It will be perfectly okay to put it in your family room on Facebook, but not on LinkedIn. And Twitter is completely different. Twitter में आपको छोटी बात करनी होती है, to the point. You have only 140 characters. Twitter is also a little bit different कि उसमें be prepared to get an onslaught if you put something controversial there. LinkedIn पर लोग थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, maybe, but not much on Twitter and Facebook. So these three have very different culture, and the people who are on it are also a little bit different. Also customize your message for different social media. इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि if you many times what people do, they do a same post on all the different media, but उनके मिजाज अलग-अलग हैं, इन social media के लोग भी अलग-अलग हैं. So customize your message on different social media. मैं आपको एक example देता हूँ. I work for a technical company, so when we put some stuff on LinkedIn, it is very, very technical because we know the people who are reading will understand. And when we put the same message on Facebook, we know the people who are reading are usually families and friends. So we tone it down from more technical to less technical and more social. So that's how you judge your audience and change your message accordingly. And of course, this goes beyond. This goes beyond. How to say? कहने की जरूरत नहीं है कि be professional. Don't go into religious बहस और सियासी बहस, उसमें मत पड़े. If you are on LinkedIn, please stick to your profession and be professional on social media. It will help you in the long term. Please don't forget जो मैंने शुरू में 3 slides दिखाई थी कि किसी ने कोई बात 10 साल पहले कही थी और मैं आज भी उसको पिक कर सकता हूँ Google करके सिर्फ. So it doesn't go away. Another important thing is interact with audience. Don't be कि यार मैंने आज एक पोस्ट किया उसके बाद मैं गायब हो गया 1 महीने के लिए. People want to interact with you. So when you write a post, look at who's commenting on it और उसको फिर आप जवाब भी दीजिए. When you interact with your audience, it creates a healthy social bond. One more thing, add value. आप पोस्ट इस तरह मत लिख. ऑफ कोर्स हम सब इंडिपेंडेंट है, आपका जो जी चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप कोई ऐसी पोस्ट लिखेंगे जिससे कोई वैल्यू ऐड हो. ये ना लिखें यार आज सुबह मैं 6:30 बजे सो के उठा और मैं थकन से भरपूर था, मुझे काम पे आना पड़ा. दिस इज नॉट एडिंग वैल्यू. So I'm very sure in your professional life you are expert at something, at many things. Add something जो लोगों को educate करे, जिससे वो उनको पढ़कर कुछ हासिल हो, उनको खुशी होगी, and in their heart they feel fulfilled. And that's the thing you want to do on LinkedIn and other social media. Be personal. Don't be too self-promotional. अगर आप कहेंगे मेरी बात सुनो मैं expert हूँ, everybody will know right away कि आप promotion कर रहे हैं. Be controversial. अच्छा, ये बात जो है जरा शायद आपको शुरू में हजम ना हो. Why am I saying be controversial? Be controversial does not mean कि go and pick up a fight with somebody. Be controversial means कि अपना point of view दें. अगर आपको एक चीज पसंद है, नहीं पसंद है, talk about it. उससे ये होगा कि एक healthy debate create होगी. अगर आप सिर्फ ये लिखें, अगर मैं आज लिख रहा हूँ कि यार आज मौसम बहुत अच्छा है और आप उसके आगे जवाब दे रहे हैं yes I agree, तो बात वहीं खत्म हो जाती है. आप कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दें कि जिससे बहस छिड़े, लेकिन हेल्दी को तो खैर आप कंट्रोल कर सकते हैं,
लेकिन ये कि कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें एंड लोग पीपल रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन समथिंग। हम सब लोगों को कहानियां सुनने का बहुत शौक है, बचपन से नानी दादी के जमाने से जो कहानियां सुनाई जाती थी वो अब भी हमारे जहनों में है। पीपल ऑलवेज कनेक्ट विद स्टोरीज, इफ यू क्रिएट सम स्टोरी पीपल विल लाइक इट। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में भी लिख रहे हैं तो उसके आसपास एक कोई कहानी होगी कि किसी ने वो प्रोडक्ट यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में आई वॉज विद अ कंपनी एंड वी वर सेलिंग वाटर पंप्स। इंडोनेशिया में एक गांव था जहां पर औरतों को कई मील पैदल चल के जाना पड़ता था और फिर वो पानी लेती थी एक कुएं से। तो हमारी कंपनी ने वहां एक पंप लगाया और उसको वायरलेस के जरिए कंट्रोल किया। तो इसकी पूरी एक कहानी बनी कि उन औरतों को अब मीलों पैदल चल के नहीं जाना पड़ता, अपने गांव से उनका कोई शख्स स्विच ऑन करता है और पानी जो है तैयार होता है कुएं में, और जब वो जाती हैं तो उनको वहां पानी पहले से ही मौजूद होता है। आई फॉरगॉट कि उसकी डिटेल्स क्या थी, लेकिन ये कि एक यूजर स्टोरी थी उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द। तो जब आप स्टोरी के साथ प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं तो इट क्रिएट्स अ इफेक्ट। और पांचवी बात, एजुकेट पीपल। लोगों को अच्छा लगता है कि उनको कोई नई बात पता चले। अब उसकी एक एग्जांपल क्या है, मैंने कुछ महीने पहले पोस्ट डाली कि जनाब कालाबाग डैम नामंजूर ये बात तो सियासी होगी, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये कि बड़े डैम जो हैं ये कंट्रोवर्शियल होते हैं। तो मैंने पोस्ट ये डाली कि जी बड़े डैम बनाने की बजाय जो दरिया हैं वो क्योंकि ढलान पर होते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए एंड रन ऑफ द वाटर टाइप, जिसमें पानी को रोका ना जाए, वो पैडल्स को मूव करें और उससे बिजली बनाई जाए। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था और उसकी वजह ये है कि जो बड़े डैम से बिजली इकोनॉमिकली पैदा की जा सकती है वो छोटे डैमों से नहीं की जा सकती। लेकिन उसकी डाउन साइड ये है कि बड़े डैम बनाने का एनवायरमेंटल डिजास्टर जो है वो सैकड़ों साल तक रहता है। तरबेला और मंगला के जो झीलें हैं उनके अंदर पता नहीं कितने गांव डूब चुके हैं और तरबेला इस वक्त 70% जो है वो रेत से भर चुका है और उसकी यूजफुल लाइफ कुछ ही रह गई होगी, 15-20 साल होंगे। और मंगला जो है वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका था एंड दे हैड टू रेज द वॉल्स ऑफ इट। उस मुशर्रफ के दौर में उसके 20-30 फुट उसके इंक्रीज किए गए ताकि उसकी झील में और पानी आ सके। सो देयर इज एन एनवायरमेंटल साइड ऑफ इट। तो कहने का मकसद ये कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए, बट इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ, इसमें काफी बहस छिड़ी। अगर आप इसकी एनालिटिक्स देखें इस पोस्ट के तो 2-3 दिनों में इस पे 36-37 हजार लोग इसको विजिट कर चुके थे और उसकी वजह यह कि थी कि दे वर फीलिंग प्रोवोकेटिव। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोवोकेटिव, ऐसी बात कि जिससे आपको लगे कि यार ये क्या कह दिया तो मैं वो एक बात कहना चाहता हूँ, आपको चाहे अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन इफ यू आर नॉट ऑन लिंक्डइन यू डू नॉट एग्जिस्ट प्रोफेशनली। ये मेरी बात आप लिख लें। मैं काफी रेज्यूमेस देखता हूँ और सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ कि जो कागज पे लिखा है किसी ने जिसको जॉब चाहिए, मैं उसको लिंक्डइन के साथ कंपेयर करता हूँ। अगर लिंक्डइन पे वो शख्स मौजूद नहीं है, इट गिव्स मी अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन कि यार ये इतना लेजी है कि इसने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल ही नहीं बनाया। एंड इट्स ऑल्सो अ प्लेस टू जज योर अकम्पलिशमेंट्स। तो मैं पेपर को लिंक्डइन के साथ कंपेयर करता हूँ। And whoever, I'm sure many of you are in the same position where you looked at resumes, and I'm very sure you also go and check on LinkedIn what the person is about. So again, if you are not on LinkedIn, you do not exist. Please create your professional profile there. अच्छा, अब देखें ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, रंगों के साथ खेलना। ये शख्स सेठ गोर्डन, he was a marketing guy for Apple. शुरू में आप शायद इसकी अपनी कंपनी है। The reason I like his post is because कि रंगों के साथ कैसे खेलता है, और रंग जो है वो जज्बात होते हैं, ये आपको पता होगा। सुर्ख जो है वो हिद्दत, मोहब्बत की अलामत है। पीला रंग का मतलब भी हिद्दत है, इसमें हीट है और थोड़ी सी शायद नाराजगी भी है। और ग्रीन कलर जो है वो अमन का पैगाम है, सफेद कलर अमन का पैगाम है। तो जिस तरह आप कलर्स के साथ जो आपकी नफ्सियात में जो इमोशंस आपके बेदार होते हैं वही आपके पर्सनल ब्रांडिंग में भी होते हैं। अगर मैं आपको कुछ नाम लूं तो आपको यकीनन कुछ कलर्स याद आएंगे। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग की कंपनी और शिपिंग की कंपनी यूपीएस, जैसे ही मैं यूपीएस कहूंगा आपको डार्क ब्राउन कलर याद आएगा। अगर मैं कहूँ फेडेक्स तो हो सकता है आपको पर्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कुछ याद आए। तो कलर्स जो है ये ब्रांड बनाते हैं।
इस शख्स ने इस ऑरेंज का जो भी ये शेड है इसके साथ अपना ब्रांड तख्लीक किया है और wherever he does this post he put this yellowish color. उससे ये होता है कि लेटर ऑन अगर आपको जहां भी ये कलर नजर आएगा आपको ये शख्स याद आएगा. और कौन सा गाना है कि तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा. तो उस खैर बात दूसरी तरफ चली गई. जहां भी आपको ये कलर नजर आएगा तुमको ये शख्स याद नजर आएगा. तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ. इसने देखें यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाली है और उसकी वजह ये है कि उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर हैं. ये सारी किताबें हैं जो इसने लिखी हैं. अगर उन किताबों के बैकग्राउंड में ये अपना चेहरा भी येलोइश कर देता तो वो छुप जाता. तो इसने ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन यूज किया है. अच्छा, इसमें एक खास बात देखेंगे, इसकी ऐनक जो है वो पीले रंग की है. So he is playing with the colors here. He is branding, even though his whole photo is black and white, the glasses still show the yellow color. Next to his name, there is a pizza slice or sushi slice. I couldn't tell what it is, but again, there is a yellow color branding. अगर आप इसकी फोटो देखें, it's all yellowish. इसकी फोटो में काफी character है. Usually when people wear a tie, they have to close their top button. He has kept his top button open. अगर आप इसकी शर्ट देखें तो इसने पैंट के अंदर टक नहीं की हुई, बाहर निकली हुई है. इसका मतलब ये है कि ये प्रोफेशनल तो है लेकिन बागी भी है, रिबेल भी है. आप देख रहे हैं कि कितनी सॉफ्ट तरीके से इसने ये मैसेज दिया है कि यार आई एम अ प्रो बट आई एम ऑल्सो अ रिबेल. मैंने टाई पहनी है लेकिन मैं बटन नहीं बंद करूंगा. मैंने कफे अपनी खोली हुई हैं. तो ये उसकी बागी नेचर को भी बताना चाह रहा है. तो these are the soft things that you can play with as you create your brand online. इसकी एक पोस्ट है कि if it's all in bold and none of it is bold. उर्दू में तर्जुमा ये होगा कि अगर आपने हर चीज पे जोर देना है तो बेहतर है कि किसी चीज पे भी जोर ना दिया जाए. अगर जुमले में कोई एक आध चीज ही ऐसी हो सकती है कि जिस पे आप जोर दें और फिर वो याद रहे. अगर आप पूरा जुमला को अगर आप हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे तो अपना मतलब खो देगी. ये सिर्फ एक लाइन की पोस्ट है लेकिन इट्स पावरफुल. ये मैसेज जो है याद रहेगा, मुझे कम से कम याद रहा है. तो ये तो थी कुछ डूज, सम डूज दैट यू शुड डू. लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द डोंट्स. वो कौन सी चीजें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, कोशिश करेंगे ना करें ऑनलाइन. पहली चीज तो ये कि राइट लॉन्ग पोस्ट. वो अखबार पढ़ने का जमाना अब चला गया. मैंने बचपन में पूरे कॉलम में पढ़ा करता था जंग के और हुर्रियत के और जसारत के, लेकिन अब वो जमाना चला गया. नाउ एवरीबडी इज सो बिजी, देयर इज nobody has time to read these long engaging texts. So if you are making a post, please make it short. आप ये कर सकते हैं कि एक से ज्यादा पोस्ट लगा दें, लेकिन पर पोस्ट कीप योर मैसेज टू फ्यू सेंटेंसेस ओनली. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और आप भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है. कभी मैं 1 घंटे की यूट्यूब वीडियो आसानी से देख लेता था, अब मैं नहीं देख पाता. मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए. मैं कभी कभार खाना बनाने की कोशिश करता हूँ घर पे, तो जब मैं यूट्यूब से कोई तरकीब ढूंढ रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि सबसे छोटी वीडियो कौन सी है, कौन सी वीडियो मुझे 3 मिनट में दाल बनाना सिखा सकती है. तो कहने का मकसद ये है कि our attention span is decreasing. Please try to keep your posts shorter, smaller. Nobody would like to read long text anymore. ये किसी CEO ने एक पोस्ट लिखी थी, और देखेंगे कितनी लंबी पोस्ट है लेफ्ट साइड पे. मैंने नाम छुपा दिए हैं, जाहिर है. If I see text like this on the left side, I am not going to read it. I will be too lazy to read all of it. उसके बाद उसको क्या हुआ कि उसको 24 लाइक्स मिली. और उसके बाद उस पे 31 कमेंट आए जो कि रेड रेक्टेंगल में देखने. उसके बाद मैंने देखा कि यार ये कौन इस पे कमेंट कर रहा है. तो मैंने देखा कि वो सारे कमेंट भी इसके अपने थे. वो अपने सब दोस्तों के साथ जाके कह रहा था कि यार प्लीज कमेंट ऑन माय पोस्ट. ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम द ऑथर हिमसेल्फ. Can you see that? Again, the point is, if you write a very long post, even though you are CEO of the company, you are not going to get attention. People will just get tired and bored. And then you have to go and beg everyone, please comment on my post. So there was a little bit of comedy, side of comedy in that.
And this also goes without being said, do not engage with negative feedback. आप मेरी बात गौर से सुने, मुझे कम से कम 25 साल हो चुके हैं ईमेल और सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करते हुए। मैंने हर किस्म की लड़ाइयां देखी हैं जिस पे लोग इतने बिफर गए थे कि वो अगर वो एक दूसरे के सामने होते हैं तो शायद गुत्थम गुत्था हो जाते। So listen to me, coming from somebody who has seen all of it, do not engage with negative feedback, just ignore it. If you ignore it, जो बोल रहा है वो थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा, and then you move on. एक और important चीज ये है कि please, if you use images, do credit. जिसको आप credit देंगे वो भी खुश होगा, and it also saves you from copyright issues later on. Do not just cut and paste image from somebody and use it. Please always give credits when you use somebody's images. अगर आपको image नहीं मिल रही किसी topic पे, there is a place called pexels.com. You can check it, you can note it down. It has thousands of free photos. आप किसी भी मौजू पर कोई post लिखना चाहते हैं, you can pick up a photo from pexels.com. And I'm sure there are many other websites which will give you royalty-free photos. This one was known to me, so that's why I've written it here. एक और चीज, please do not write everything in capital letters. मैंने एक शुरू में अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट दिखाई थी कि if everything is in bold, nothing is in bold. अगर आप इस तरह की पोस्ट लिखेंगे, सबसे पहले तो मेरा जहन थक जाएगा कि मैं इसको पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं. It takes extra brain power to actually read all the capital letters. Or I think everyone knows it, कि online, if you write everything in capital letter, it means you are shouting, you are screaming at everyone. तो जो मजलिस के आदाब और जो etiquettes of social media हैं, वो ये कि do not write everything in capital letters. हाँ, आप एक दो लफ्ज capital कर सकते हैं जहां आपने तवज्जो दिलानी हो. But if you write the whole thing capital, it comes out across as shouting and rude. Okay. Also, do not use excessive hashtags or ampersand or where you tag somebody. Look at this post. ये एक Lantec, एक Taiwanese company है. They make Ethernet switches. Very good company, very good products. I have used their product for many years. But when I see a post like this, it is such a turn off. अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से जो भी hashtag है, if I click on it, it's gonna take me to some advertisement. So it's very clear that they are just trying to get me to some other page and forcing me to go to some web page where I don't want to go. So even though the first 3 or 4 lines are quite neutral, they are trying to sell something. But this is excessive hashtagging. Do not do that. People see through it right away कि आप क्या करना चाह रहे हैं, and it will be just turned off. Next time they will not visit your website or look at your posts. दूसरी चीज ये कि आप do not, मैंने इस पोस्ट के लफ्ज गिने. There are 30 words in there. Roughly 30 लफ्ज हैं और उसमें से 17 जो हैं, they are some kind of links. So again, this is a predatory type of post. कि अगर मैंने किसी भी blue color के लफ्ज पे click कर दिया, it's gonna take me to some other advertisement website. So this is excessive tagging and linking. So please try to avoid that. Again, a few things to remember. Content lives forever on the internet. अगर आप अपनी family के सामने कोई चीज share करने से शर्मिंदा होंगे, please do not write it online either. Keep it offline. Never share confidential or proprietary information about your company or our customers. I think number 3 goes beyond saying to all of us are professional. I'm sure all of you know कि कोई company के बारे में भी कोई confidential बात आप online मत करें. It will come back and haunt you. Okay, now I will give you 5 extra things that we can do. First of all is follow your company. Why am I saying follow your company? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप शाह से बढ़कर शाह के वफादार हो, जो हम उर्दू में कहते हैं. But in your professional life, it is very important that you become visible within your company. अगर आप अपनी company को follow करेंगे तो आपकी company में ही जो लोग decision makers हैं, you will become visible to them. And if a company grows, you also grow. So that is the point here, that follow your company on LinkedIn and share company posts.
Share and engage, just like I said. One more point, tag and hashtag your company. अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो it's okay, not okay, but it's actually recommended कि आप अपनी कंपनी को hashtag करें, and it looks good both on you as well as the place you work for. And it's very important that you stay connected. Again, just like I said, don't just write and go away for months. You have to come at least. मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त फोन हाथ में लेके बैठे रहें, जो कि हम में से बहुत करते होंगे. But at least once a week, go and check on your LinkedIn कि यार किसने मेरी पोस्ट पे react किया है. Go and talk to them. Stay connected. अच्छा, नंबर 5 आई वांटेड टू से कि आजकल कौन सा मीडियम जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है. तो उसका सबसे नंबर 1 आंसर है वीडियो, शॉर्ट वीडियो. आप 20-30 मिनट की वीडियो मत बनाएं, कोई भी नहीं देखेगा. 3 मिनट और लेस, 3 मिनट्स और लेस. इवन टुडे, एक्चुअली टुडे some of the company videos are usually 1 minute or less. उसका रीजन ये कि ह्यूमन अटेंशन स्पैन जो है वो कम से कम होता जा रहा है. तो शॉर्ट वीडियोस यूजुअली गेट द मोस्ट हिट्स. ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो कंटेंट देखना चाहते हैं. दूसरे नंबर पर है छोटा टेक्स्ट, 3 sentences और लेस, जो कि ट्विटर स्टाइल हो, जिसमें लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो. They can quickly read 2 or 3 lines and get the point, and then they go to next thing. Audio is number 3, क्योंकि उसमें शक्ल नजर नहीं आती. It is left to your one sense, which is hearing कि क्या बात हो रही है. So it's less effective these days as compared to video. And the 4th number is text. For obvious reason, it is very passive. It's not interactive, and people cannot see your face expressions, your body language. Now, in near future, as virtual reality is coming up, my guess is that will be the most effective media. So keep your options open, look for it. Whenever that becomes widely available, get on that bandwagon. Today, it is video, text, audio, text. Virtual reality is coming soon. अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको यहाँ से ब्रेक लेके इन खातून का LinkedIn पेज दिखाना चाहता हूँ. जेसिका चेन. She is a motivational speaker. Her first language is not English. I think it was Chinese. So, but she has very confidently put together this page in a sense that the confidence just shows from everything she does and she writes. अगर आप इसके फोटो पे क्लिक करें, there is actually a video behind here where there is a video message. If you click on this speaker, there is an audio message. She tells what she does. तो सिर्फ लफ्जों से काम नहीं लिया जा रहा, बल्कि ऑडियो विजुअल, आपकी जो सेंसेस हैं, 6 सेंसेस हवा से खमसा, 5 में से कम 3 या 4 सेंसेस को ये मैसेज जो है मुख्तलिफ तरीकों से is trying to hook you on with video, with audio and with words, whatever works and gets you hooked to it. इसके लफ्जों को आप अल्फाज को देखेंगे, she writes very well कि क्या करती है. और उसने इस जगह को पूरी how to say maximum efficiency के साथ यूज किया है. Every sentence that is here tells you what she does, and it tries to get you hooked to her campaign. She's some of the services she's providing to the corporate. और जो most important thing है, यहाँ LinkedIn में एक featured area होता है, and she has put lot of her videos here. And like I said, people like to click on videos more than reading text or just the photos. So this was just an example I wanted to show of how effectively LinkedIn page can be used to market yourself. Uske baad, I wanted to give you an example of a very good post in my opinion, where we got lot of engagement. इसकी अच्छी बात क्या है कि there is a image. एक तो सबसे पहले तो कि text long नहीं है, 2-3 लाइन है, you won't feel lazy reading it. The image act as a hook. As soon as I see this image, maybe I feel like clicking on it and trying to find out what's more. Hashtags are not excessive. If I want to say, I would say 5 or less hashtags are good enough. और उसमें links हैं कुछ.
If you want to read more, you can go and read more. तो प्यासे के लिए कुआं भी मौजूद है, अगर आपको ज़्यादा information चाहिए, you can go and get there. और ये पूरी पोस्ट जो आप 1 मिनट या लेस में इसको रीड कर सकते हैं. So I thought this was a very good post for LinkedIn and something I wanted to discuss with you. कि अगर आप short post लिखेंगे वीडियो के साथ, तस्वीर के साथ, you will see lot of engagement. तो ये सब तो था सोशल मीडिया के बारे में. और मैं टाइम क्विकली चेक कर लूं. आई थिंक आई एम ऑन टाइम. मेरी 2 स्लाइड्स रह गई हैं, बट आई वांटेड टू गिव यू दिस बोनस slide on email etiquettes. Again, I think you know most of it. Subject line ऐसी लिखें कि बंदे को ईमेल पढ़ने की जरूरत ना पड़े. इस बात को गौर से दोबारा सुने. Subject line, make your subject so clear that the people don't have to read your email. If you, sometimes I just write everything in one subject, maybe say 5 or 6 words, that let's meet for a meeting at 6 p.m. and that's it. Then I don't have to write a whole email. So subject line is your hook in an email. Again, write short emails. आप सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत से लोग लंबी ईमेलें लिखते हैं और उसको वाकई पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता. Be to the point. Write maybe couple of paragraphs. एक एम्प्लॉय था मेरे पास, वो हर ईमेल जो है वो 2-2, 3-3 पेजेस की होती थी. उसमें अपनी वो फैमिली का जिक्र भी करता था, अपने घर के इश्यूज भी डिस्कस करता था. और मेरा सवाल उससे सिर्फ ये होता था कि यार तुम्हारा काम रेडी है कि नहीं. और उसके बाद वो इतनी लंबी तौजी आती थी. तो मैंने उसको उसकी परफॉर्मेंस में लिखा कि इसको सारी ईमेल्स हैं वो 10 लाइनें या उससे कम में लिखनी चाहिए. एंड आई एक्चुअली मेंटर्ड हिम. मैं उसकी ईमेल्स को एडिट करता था उसके साथ कि इनको 10 से कम लाइनों में लिखो. So again, 10, even 10 is too much. Try to finish your email in 5 lines or less. किसी के पास आजकल वक्त नहीं है कि वो लंबी ईमेलें पढ़े. Again, number 3 मैंने पहले ही बता दिया कि आप फैमिली लाइफ को प्रोफेशनल ईमेल्स में डिस्कस ना करें. ग्रीटिंग्स हमेशा प्रोफेशनल लिखें. आई नो के वेस्टर्न कल्चर इज वेरी कैजुअल. यहाँ पर प्रोफेसर को उसके नाम से लेके बुलाते हैं. It's perfectly okay, but be, how to say, if you want to be on the safe side, it's always okay to say dear, not dearest, but dear. Dear is a good way to go with it. If you don't know the person, go with professional greetings. Number 5, we already discussed कि capital letters में मत लिखें. It appears as you are shouting. Abbreviation and acronym. हर कंपनी में बहुत सारी abbreviations होती हैं जो कि उनके लोकल लोगों को तो पता होती हैं लेकिन बाहर वालों को नहीं पता होती और या newcomers को नहीं पता होती. So please write it down. At least for the first time you are using abbreviations, write them down what it is. ये जो NEDAC का लोगो है लेफ्ट साइड पे, ये NED एलुमनाई ऑफ कनाडा है. अगर आपको नहीं पता तो अगर मुझे चाहिए था कि मैं पहली स्लाइड पे इसको पूरा स्पेल आउट करता तो उसके बाद से सबको पता रहे. और आप सब इस बात से एग्री करेंगे कितनी दफा ईमेल लिखकर हम कहते हैं अबे यार मैंने ग्रामर नहीं चेक की, स्पेलिंग्स नहीं चेक किए. इट कम्स अक्रॉस अनप्रोफेशनल. सो स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक आर यूजुअली बिल्ट इनटू आउटलुक दीस डेज. प्लीज डू दैट. Use of emojis. Sometimes I use happy face in an email, but be careful. Don't use emojis for people who you are talking to for the first time or higher up in the chain. अगर मैं अपने CEO को email लिख रहा हूँ तो I will probably refrain from putting a happy face or clapping emoji or anything. अगर आप किसी के साथ free हैं, then it's okay. So use your judgment when using emojis in email. Or number 9, जब भी reply to all करें, please be careful. I'm very sure in your professional life you have seen where people actually wanted to say something to one person and by mistake they hit reply all, and it just how to say, the issue just mushroomed. और फिर उस बात को contain करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो फैल जाए. Number 10, अगर 3 emails के बाद आपका मसला हल नहीं हो रहा, please pick up the phone and talk to the person. Email is not the medium where emotions come across well. मैंने बहुत दफा email बहुत अच्छे mood में लिखी है, but for the other person to him it appeared as if I was not happy. और उसकी वजह ये कि the words do not communicate जज्बात, do not communicate emotions. तो अगर 2-3 emailों के बाद मसला हल नहीं हो रहा, please talk to the person. You will find amazing results. कि जब आप 1-to-1 बात करते हैं सारी चीजें हल हो जाती हैं. So guys, that was my last slide. I hope
के कोई एक बात भी अगर आपने नई सीखी है तो मैं समझूंगा कि हम सबके पिछले 1-1.5 घंटा जो इट वाज यूजफुल। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करें, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। मेरा ईमेल एड्रेस लेफ्ट साइड पर है। और नीडैक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक जहांजेब साहब, अलीम साहब और जावेद साहब। जो आप देख रहे हैं इसके पीछे कई हफ्तों की प्रेपरेशन शामिल है जो इन सब साहिबान ने की है। वो ये आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन बिहाइंड द सीन। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन रोकता हूँ। यहाँ पर एक रिएक्शंस का बटन है, आपके पैनल पे आ रहा होगा। अगर आप अपना हाथ उसमें रेज करें देन आई कैन टॉक टू यू। लेट मी क्विकली चेक इफ वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन चैट। एक क्वेश्चन है कि लिंक्डइन प्रीमियम के फवायद। यार, frankly, many times I have got LinkedIn Premium and I always do it when I am searching for a job. If you are looking for a job, then it is certainly worth it. Some stats say that your chances of getting a new job with LinkedIn Premium is 2.6%. So 2 से 3 गुना आपके chances बढ़ जाते हैं because you can see competitor info के यार किसने apply किया है. However, it's not cheap. I think it goes up to $240 a year. Of course, if you want to do it, go ahead and do it. I usually do it when I'm looking for new job. तो मैं 2-3 महीने के लिए इसको यूज कर लेता हूँ and then I go back to basic version. असद असगर कुछ सर्चेबल टर्म्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं. I think I will let you talk to me in audio. या फिर आप मुझे मैसेज कर दें क्योंकि सवाल पूरा नहीं है उस वक्त. सो आई थिंक यही 2 सवाल हैं इस वक्त. आई विल ऑल्सो स्टॉप शेयर सो आई कैन सी सम ऑफ द थिंग्स. असद असगर, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं मुझसे. चलें, बहुत शुक्रिया. लगता है जो मैंने शेर शुरू में पढ़ा था कि अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो लगता है वो बात उतर गई है, लोग समझ गए हैं. बट आई एम वेरी सर्चेबल, रीचेबल, अप्रोचेबल. अगर आपको सवाल पूछने हो तो प्लीज आप किसी भी वक्त रीच आउट कर सकते हैं. मलिक पूछ रहे हैं कि कोई रेज्यूमे का एग्जाम्पल दीजिए. लाइव में इस वक्त नहीं प्रोवाइड कर सकता मलिक साहब, लेकिन इस कॉल के बाद आपको जरूर दूंगा. It's not for me, it's for everybody. Like yes, it is for everybody. इत्तेफाक से इस वक्त रेडी नहीं है और मैं लाइव नहीं चाहता, क्योंकि मेन चीज हमारा इस मकसद ये है कि हम क्योंकि अपना शो केस करना चाहते हैं, मेनली अपना प्रोफेशन और अपना, तो क्योंकि लोगों का मैं देखता हूँ कि 3-3, 4-4 पेज का जो रेज्यूमे होता है, वही जो आपने स्टोरी सारी सुनाई है, तो ये हमारे लोग आमतौर पे ना थोड़ा सा करते हैं. और प्लस दूसरा, इन लोगों को थोड़ा सा मैं अपने लोगों को, दोस्तों को बताता हूँ कि जब आप किसी कंट्री में, हमारे खासतौर पे कनाडा में क्योंकि इमिग्रेशन हो रही है, तो हमारे एनीडेन आते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल हमारे बैक होम में मैनेजर होते हैं या जो भी उनकी अच्छी पोजीशन होती है, वो यहाँ पर भी वही पोजीशन आके शो करते हैं. बिल्कुल. तो क्योंकि मैनेजर को तो वहाँ की इन्वायरमेंट चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके आप मैनेजर बनते हैं वहां पर. तो कम से कम कोई भी आपको डायरेक्ट मैनेजर, आप दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पता आपको, तो कोई भी नहीं मैनेजर के लिए जब आप लिखेंगे तो आपको स्ट्राइक डाउन कर देगा अपना. बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की. सो आई वांटेड टू से वन थिंग कि जो आपका मास्टर रेज्यूमे है, इट शुड बी ऑनलाइन नाउ, व्हिच इज लिंक्डइन. उधर से फिर आप पेपर रेज्यूमे बना सकते हैं. द होल पर्पस ऑफ पेपर रेज्यूमे इज जस्ट द फर्स्ट इंप्रेशन, कि कोई रिक्रूटर उसको देखेगा और यूजुअली इट गेट्स स्कैन्ड फॉर द कीवर्ड्स. तो जॉब के हिसाब से आप जो कीवर्ड्स हैं, जो अगर जॉब कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, यू पिक द कीवर्ड्स फ्रॉम इट, पुट इट इन योर रेज्यूमे, ऑन योर पेपर रेज्यूमे. उससे ये होगा कि यू गेट योर फुट इन, recruiter will get attracted to it, but the first thing recruiter is going to do is go and check it out on LinkedIn. आजकल एक टर्म IoT से बहुत यूज हो रही है, इट्स कॉल्ड डिजिटल ट्विन.
आजकल लोग आपसे इन पर्सन बाद में मिलते हैं, वो आपसे डिजिटली पहले मिलते हैं। इस वक्त जो 70-80 लोग इस यहाँ मौजूद हैं, मैं सिर्फ 4 या 5 लोगों से जिंदगी में मिला हूँ। बाकी 75 लोग जो हैं वो मुझे पहली दफा डिजिटली देख रहे हैं। तो द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ ऑन लिंक्डइन इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन। और जब भी हम पहले मिलते हैं तो जाहिर है फर्स्ट इम्प्रेशन हर एक अपना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है। आजकल के दौर में वो इम्प्रेशन पेपर से मूव होके लिंक्डइन पे चला गया है। सो मालिक जादेव साहब, बात शायद लंबी हो गई, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि कीप योर मास्टर रेज्यूमे ऑन लिंक्डइन, पेपर इज जस्ट अ कॉपी ऑफ इट। तो अब तो मुगल साहब ज्यादातर जो हायरिंग हो रही है वो भी वर्चुअली हो रही है सारी। वो भी वर्चुअली हो रही है। तो इसलिए आपको जो है इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, वो इस तरह का कि क्योंकि बाद वक्त तो अब सामने बैठा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नजर आती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा सकते, तो आपका रेज्यूमे बड़ा टू द पॉइंट होना चाहिए ताकि बिल्कुल। तबस्सुम ने पूछा है कि कुछ टेक्निक्स बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए। तबस्सुम, द नंबर 1 थिंग टू डू इज टू हैव योर ओन वेब पेज. That's where all the traffic will go. LinkedIn is not the place to do direct business. LinkedIn पे आप उसको एडवर्टाइज कर सकती हैं, फिर सोशल मीडिया पे उसको एडवर्टाइज कर सकती हैं, बट यू नीड योर ओन बिजनेस वेबसाइट। उसको आप अमेजोन पे भी ले जा सकती हैं, दूसरी चीजों पे भी, लेकिन सोशल मीडिया इज मोस्टली टू एडवर्टाइज दैट। चलें जावेद साहब, आपकी तरफ से कोई इख्तितामी अल्फाज। आई थिंक वी हैड अ गुड सेशन टुडे। साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और यू रियली गिव अस अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, गिविंग अस वेरी प्रैक्टिकल hints. I again wish to thanks to all guests who has spared their time to join this workshop. और मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन मिली होगी जो हर एक के लिए यूज़फुल होगी। मैं अपनी ट्रेनिंग कमेटी के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि हम कुछ फर्दर अरेंज कर रहे हैं चीज़ें, वर्कशॉप्स हैं कुछ, और कुछ हम जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पर एक वर्कशॉप है विच इज़ इन पाइपलाइन, और लिंक्डइन लर्निंग पर भी हम इंशाल्लाह वी विल बी गिविंग गुड इंफॉर्मेशन टू अवर NEDAC members so that people can take advantage of these things. फिर उसके अलावा हमारा एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है कि हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स अरेंज करें अपने NEDAC मेंबर्स के लिए जो अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं इन प्रोफेशनल फील्ड, because whatever they learn back home or somewhere else in the world, normally Canadians want a local qualification or certification, which we will try to manage. और मैं अगेन थैंक्स अ लॉट अवैस साहब, और ये आखिर में जावेद इनाम साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद इख्तितामी कलमात कहें। बहुत शुक्रिया टू एवरीबॉडी हु स्पेयर टाइम टुडे। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, बड़ा अच्छा, बड़ा इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन रहा आपका। बड़ी काम की बातें सीखी हमने, और ख़ास तौर पे एक चीज़ आपकी बहुत पसंद आई मुझे। तमाम चीज़ों के साथ आपने जिक्र किया कि अगर ईमेल से मामला नहीं निमट रहा या नहीं हल हो पा रहा तो आप टेलीफोन पे बात कर लें। मेरा ख्याल एक अच्छा आइडिया यूँ है कि जब हम लिखते हैं तो बाज़ औक़ात हम जो लिखते हैं वो दूसरी पार्टी उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाती, फिर हम भी बाज़ जगह थोड़ा नज़र आता है जैसे एग्रेसिव हो गए हैं। तो बेस्ट थिंग है इसके यार 1-2 बार के बाद अगर बात हो जाए तो अच्छा है। तो आपका बड़ा शुक्रिया, जावेद हनीफ साहब और अलीम साहब का बड़ा शुक्रिया, इन लोगों ने बहुत एफर्ट की, और तमाम मेहमानों का बेइंतहा शुक्रिया। आज हमने एक छोटी सी कोशिश ये की कि हमारे यहाँ जगह की कंस्ट्रेंट्स थी, लेकिन उसके बावजूद कोई 14-15 लोग आज हमारी तरफ मौजूद हैं, और हमने ये वेबिनार जो है बड़े स्क्रीन पे देखा है, और बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि वो उसमें बिजी हो गए। एक सवाल है वैसा आपसे मेरा, ये बताएं कि लिंक्डइन का सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या नजर आता है ग्लोबली? अगर आप ये रीजन वाइज मुझे बता सकें। रीजन मींस नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियंस एंड मिडल ईस्टर्न, सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कोई ऐसी स्टैट्स हैं आपके पास जो इसको आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टार्ट विद सोशो इकोनॉमिक।
right? 90% जो हमारी engagement customer के साथ है in B2B. B2B is business to business, where you are not selling retail, you are selling के railway engine किसी मुल्क को बेचना है, बस किसी को बेचनी है, not a consumer item. 90% of the first engagement with the customer is happening through LinkedIn today. तो तबस्सुम साहब आपने कहा था कि बिजनेस कैसे वहां किया जाए. बिजनेस आप लिंक्डइन पे नहीं करेंगे, बट इट इज अ वेरी पावरफुल टूल टू एडवर्टाइज इट. तो और सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में है, सेकंड नंबर पे इंडिया. जस्ट बिकॉज द पॉपुलेशन यू सी लॉट ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम इंडिया. चाइना में बिल्कुल नहीं है, और उसकी वजह ये कि दे हैव देयर कंट्रोल ऑन इट, सो लिंक्डइन इज समटाइम्स नॉट इवन अवेलेबल देयर. But outside of China, rest of the world is very quickly converging on LinkedIn. जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, कुछ सालों के बाद कोई नई चीज भी आ सकती है, but today LinkedIn is the most powerful tool in socio-economic terms as well as educational. Educational में LinkedIn is providing lot of free courses, so आपको किसी भी मौजू पे free course मिल जाएगा. Or if you are expert, as you start putting your post, people actually come and ask you for advice. They ask you to contribute to some research papers, something that LinkedIn is promoting. So in that way, you also get a lot of exposure. Among all social media, I would say LinkedIn is the most powerful in socio-economic as well as educational terms. लंबा आंसर, but hopefully. वैसा बहुत शुक्रिया. आगे फ्यूचर में आपसे हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर. और हमारे NEDAC का कोई भी मेंबर आपसे कांटेक्ट करे तो आप उसको हेल्प आउट करेंगे? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हुए हैं, शरीफ साहब. वो आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं. मैं शरीफ साहब के हवाले करता हूं. अस्सलाम वालेकुम. शरीफ मेरा नाम है. मैं भी NED का ग्रेजुएट हूँ. बस मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई. एक चीज इसमें मेरा ख्याल है, आप इट्स सजेशन फॉर यू कि आप एक चीज इसमें और ऐड कीजिएगा, क्योंकि अभी कोविड के दौरान ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग जो हैं वो जाके लोगों से मिलते नहीं है, टीम मीटिंग्स होती हैं. तो माय एम्फेसिस इज दैट, माय ओपिनियन इज दैट कि टीम मीटिंग से आप इन कांटेक्ट तो रहते हैं, लेकिन आपकी रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती. रिलेशनशिप डेवलप सब उसी वक्त होती है जब आप पर्सनली लोगों से मिलते हैं. तो आई ऑलवेज एनकरेज इन माय कंपनी, आई वर्क फॉर अ कंपनी एंड आई ऑलवेज एनकरेज पीपल कि भाई आप अब कोविड खत्म हो चुका है, डोंट गो ऑन टीम मीटिंग सिर्फ इसलिए कि अगर लोग मौजूद नहीं है कोई दूर रिमोट प्लेसेस पे, बट गो एंड meet them, sit down with them to develop the relationship. Without meeting personally, you cannot develop a relationship. That's what I want to say. That's absolutely true, and we are seeing it a lot. जो कनेक्शन थे कि जो आप कॉफी पीने जा रहे हैं तो वहाँ लोगों से बात हो गई, वो सारे कनेक्शन अब टूट चुके हैं. इट्स ऑल वर्चुअल नाउ मोस्टली. सो आई कंप्लीटली एग्री. जो फेस टू फेस बन सकता है बॉन्ड, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता. राइट, थैंक यू. बहुत शुक्रिया अवैस साहब अगेन, और सारे आज जो हमारे गेस्ट आए थे उन सबका बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट. Okay, thank you very much. We'll be in touch. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you.